Hello friends, today we are going to learn examples 4th onwards. So let's start from 4th examples. 4th examples is given that a plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. So यहाँ पे एक प्लेन है वो सी लेवल से 5000 मीटर की हाइट पे है. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? Them means plane and submarine. यहाँ पे एक submarine है. It is exactly below the 1200 meter from sea level. So we have to find vertical distance between plane and submarine. So let's try to find out it. Here we can see that here total distance is 5000 meter from sea level and 1200 meter from sea levels. So we have to add 1200 meter and 5000 meter. So answer is height of plane above the sea level, that is 5000 meter, and floating a submarine below the sea level, that is 1200 meter. So we have to add both distance. That means the vertical distance between the plane and the submarine, that is 5000 plus 1200. अगर यहाँ पे दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तभी हमको ये वर्टिकल डिस्टेंस मिल पाएगा. सो वी हैव टू ऐड 5000 प्लस 1200, दैट इज 6200 मीटर. सो दैट इज द आंसर. Thus the vertical distance between the plane and the submarine is 6200 meter. Now let's move next example. Question number 5. It is Mohan deposit 2000 rupees in his bank account and withdraws rupees 1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. यहाँ पे मोहन बैंक में 2000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है, मीन्स अकाउंट में जमा कर रहा है, एंड विड्रॉ मीन्स निकाल रहा है. कितना? तो कि 1642 रुपीज़ नेक्स्ट डे को वो निकाल रहा है. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहे हैं रुपीज़, उनको अगर हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम वो डिपॉजिट कर रहे हैं उनको कौन से साइन से रिप्रेजेंट करेंगे? सो वी हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय पॉजिटिव इंटीजर. सो डिपॉजिट अमाउंट को हम 2000 रुपीज़ से उनको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड जो विड्रॉल अमाउंट है उनको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. सो टोटल बैलेंस विड्रॉल के बाद मोहन के अकाउंट में टोटल बैलेंस कितनी है, दैट वी हैव टू फाइंड. सो हियर आफ्टर विड्रॉल्स बैलेंस इज 2000 माइनस 1642 रुपीज़, दैट इज रुपीज़ 358. हमको विड्रॉल वाली रकम है वो डिपॉजिट वाली रकम में से सब्ट्रैक्ट करनी है, दैट इज टोटल रुपीज़ 358. So thus we can say that the balance in Mohan's account after withdrawal is rupees 358. Now let's move next example. Question number 6. Rita goes 20 km towards east from A point. From A point, Rita moves 20 km towards east. East means this side. A to the point B. B तक आती है, ठीक है. From B, she moves 30 kilometers toward the west along this same road. यहाँ से B से 30 kilometers west side आती है रीटा, ठीक है. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards the west? By which integer will you represent her final position from A? So यहाँ पे रीटा यहाँ से ओ से स्टार्ट करती है, यहाँ से ए से स्टार्ट करती है, ए से स्टार्ट करके ईस्ट साइड पे 20 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए टू बी यहाँ पे आती है, एंड नेक्स्ट वो बी से वेस्ट साइड पर जाती है 30 किलोमीटर्स. अगर हम ए टू बी साइड पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करते हैं, सो बी टू सी साइड मीन्स वेस्ट साइड कौन से इंटीजर से हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, सो वी कैन से इजीली अगर दोनों अपोजिट हैं तो अगर एक को पॉजिटिव इंटीजर करते हैं रिप्रेजेंट तो दूसरे को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. So according to the number line, Rita moves towards the east is represented by a positive integer. ये हमको डेटा में दिया गया है. So now, but she moves in opposite direction. Opposite directions means west side पे अभी Rita जा रहे हैं, means Rita moves west side. So it is represented by a negative integer. अगर दोनों opposite sign है, opposite direction है, so we have to represent with opposite integers. So distance from A to B distance total is 20 km. Now distance from B to C that is 30 km. B से रीटा कहाँ पे जाती है, C तक, so that is total distance is 30 km. Now what we have to find distance between C to A, इतना distance find करना है. So हमको total distance B to C distance में से कितना distance subtract करने का, इतना distance we have to subtract. So if we subtract distance A to B from C to B, then we get the answer from C to A. So distance from A to C or C to A both are same distance, that is total distance A to B is 20 km and we have to subtract B to C distance, that is 30 kilometers. So we can say that A to C and distance is minus 10 km. Okay, so 20 minus 30, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन है. So we have to subtract smaller number 20 from bigger number. So 30 minus 20 that is 10 and we have to put sign bigger number sign. So यहाँ पे bigger number 30 है, उनकी साइन माइनस है. So we have to put यहाँ पे minus sign. Okay, so thus the Rita is at final position from A to C is minus 10 km. A to C is minus 10 km. Okay, so this is the final answer.